For joining us here. Indian enemies are falling like flies and their fate is because of their own doing. Khalistanis plotting terror attacks from Canada are meeting their karmic end. Similar is the case with Hardeep Singh Nijjar. What happened in Canada's British Columbia is a result of Nijjar's checkered past, or terror past, if you will. He was allegedly shot down by his rivals in a gang war. But Trudeau, on the other hand, claims India was involved. So far, viewers, Trudeau hasn't furbished any proof. But let's tell you about the man who is being defended by the Canadian Prime Minister, no less. Startling revelations have unfolded, something that Justin Trudeau must consider reading up on. Nijjar came to Canada using a fake passport in 1997. Nijjar entered Canada under the alias Ravi Sharma. The Indian government sources have also revealed to us about Nijjar that he was able to stitch together a terror ecosystem across Punjab and Canada. Nijjar, viewers, had connections with local goons in Punjab and Bihar. He was introduced to the world of crime by Gurneet Singh. Now let's tell you about Hardeep Nijjar's Pakistan connection. If we are talking about terror, how can we not talk about Pakistan? And how Nijjar received terror training from the Pak ISI, the deep state, which helped him raise a kill squad to perpetrate his crimes in Punjab and elsewhere. Nijjar, in 2012, Nijjar visited Pak, got in touch with BKI chief Tara. Nijjar received arms and ID training in 2012 and 2013. US-based Harjot Singh trained Nijjar on handheld GPS device. The details are too many, and most of it is in public domain. But let's open this up with someone who knows a thing or two about this. We have with us Maninder Singh Ji Bitta Saab, who needs no introduction, is the chairman of the All India Anti-Terrorist Front. MS Bitta Saab, Times Now पे आपका स्वागत है. सबसे पहले बिट्टा साहब, मैं चाहता हूं कि आप देश के लोगों को बताएं और दुनिया के लोगों को जो टाइम्स नाउ देख रहे हैं उनको बताएं कि निज्जर है कौन, जिसको ट्रूडो जिसके लिए बैटिंग कर रहे हैं. देखो जी, मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूं कि इतना बड़ा कनाडा देश, दुनिया पूरी कनाडा के अंदर, पंजाब, हिंदुस्तान या पूरी दुनिया कनाडा में जाती है, एजुकेशन लेती है, व्यापार करती है. कितना बड़ा नाम कनाडा, और कनाडा ने अपने नाम को एक निज्जर के कारण अपने नाम को बिल्कुल डुबो के रख दिया. एक पाकिस्तान, वो हमारे साथ लगता हुआ पाकिस्तान, जो आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा, जिसको कभी बराक ओबामा ने कहा था ये आतंकवाद की फैक्ट्री, यहां नार्को टेररिज्म, यहां आतंकवाद, यहां बम, यहां गोले, यहां फसाद, एक उसके साथ मिल गया कनाडा, जहां नार्को टेररिज्म, जहां पूरी दुनिया से किसी का कत्लेआम करके, कहीं बम चला के, कहीं गोली चला के, किसी देश को तोड़ने की साजिश करके आप एक पाकिस्तान, एक दूसरा पाकिस्तान कनाडा, वहां पे चले जाओ. ये आज कनाडा की हालत होगी. और निज्जर पंजाब में हजारों बेगुनाहों का ये कत्लेआम करके, निज्जर और निज्जर के साथ हजारों लोगों का खून पीने के बाद, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ने के बाद, हजारों बच्चों को यतीम करने के बाद, जिनको मारा, किसी के हाथ में बंदूक नहीं, किसी के हाथ में तरचूल नहीं, किसी के हाथ में किरपान नहीं, इतना देखा, इसके सिर पे पगड़ी नहीं है. ये हिंदू है. अगर कोई सिख भी था उसके सिर पे पगड़ी नहीं थी, अगर मुसलमान भी था उसके ऊपर पगड़ी नहीं थी, अगर ईसाई भी था उसके सिर पे पगड़ी नहीं थी. बच्चों से निकाला, ट्रेन से निकाला, पगड़ी वाले को छोड़ा, थाड़ थाड़ करके मार दिया. ये वो निज्जर आतंकवादी, ना ये खालिस्तानी, ना ये राष्ट्रभक्त, ये कौम के गदार, ये कौम के दुश्मन, ये भारत माता के दुश्मन, और वहां जाके अड्डा खोल लिया और नार्को टेररिज्म के बहुत बड़े स्मगलर बन गए. और पाकिस्तान के जरिए पंजाब के अंदर, जिस पंजाब के लोग अभी चुप बैठे हैं, पूरा हिंदुस्तान का समाज, सिख समाज चुप बैठा है, उनको ये नहीं पता कि ये निज्जर ने हमारी पंजाब की जवानी को बर्बाद कर दिया, हमारी पंजाब को खोखला कर दिया, पंजाब को खाली कर दिया. उसके ऊपर कनाडा का प्राइम मिनिस्टर निज्जर की इंक्वायरी के लिए भारत को कहता है कि इसकी जांच की जाए. वाई?
अगर कनाडा से कोई आके हिंदुस्तान में कनाडा में गलती करके कोई उसको शरण दे दे तो हम गुनाहगार हैं। हम कनाडा तो क्या, हम पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देश हो, कोई क्रिमिनल व्यक्ति हो, हमारे हिंदुस्तान में वो पैर नहीं डाल सकता। और वहां वो कहते हैं हमें आजादी है, हिंदुस्तान को या किसी देश को तोड़ने वाले की आजादी है, और वहां वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वो कनाडा नहीं है, वो दूसरा पाकिस्तान है जिसके लिए ऐसे आतंकवादियों को शरण दी जाती है। वहां हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार होते हैं, वहां मंदिरों का अपमान होता है, वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों आपने बिल्कुल सही कहा बिट्टा साहब कि कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन गया। ये इसीलिए भी क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, इससे पहले उन्होंने अपने नेशनल असेंबली जो उनकी पार्लियामेंट है उसमें कहा था कि वो तो एक ओसामा मार्टर है, और जस्टिन ट्रूडो कुछ वोट्स के लिए निज्जर को भी उनकी गुणगान कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं पंजाब क्यों बर्बाद हुआ। हम पॉलिटिशियनों ने पंजाब को बर्बाद किया, हमने सस्ती राजनीति की, हमने सदा के लिए कुर्सी पाने के लिए एक भिंडरावाला खड़ा कर दिया। और किसने किया आपको पता है, हम भी उसी पार्टी में पुराने बचपन से, इसमें तो कोई झूठ है नहीं। एक व्यक्ति खड़ा कर दिया, इसको हरमंदिर साहब में घुसेड़ दिया, और उसके बाद क्या हुआ, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, एक वोट और एक सत्ता पाने के लिए। को किताबों की जरूरत नहीं, मेरा घर बिल्कुल सामने, बचपन से लेके हर चीज को देखा। हरमंदिर साहब में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, गांव के गांव खाली करा दिए। 5 बजे के बाद कोई दिखाई नहीं देता था। मां कहती थी 5 बजे तक अगर मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा पिता घर आ गया तो सेफ है, नहीं तो गोलियों से उड़ा दिया जाए। ये सिख कौम की पहचान जो गुरुओं ने सजाई थी मजलूमों और मानवता की रक्षा के लिए, उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई की, इन्होंने हमारी पगड़ी की पहचान क्या बना दी। वही हुआ कहां, कनाडा के अंदर। एक खालिस्तानियों की वोट लेने की खातर 22, 23, 24 सीटें कितनी हैं, वो सीटें लेने की खातर आप किसी कंट्री के साथ खिलवाड़ करेंगे। और वो देश आपको इज्जत दे रहा है, आपके प्राइम मिनिस्टर को इज्जत दे रहा है। अगर प्लेन खराब है तो कहता है 1 नहीं 200 प्लेन खड़ा, आप ले जाइए टूटो साहब, ये देश आपका है, हमारा व्यापार चलता है, हमारा भाई बहन रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता है। बेटा साहब, पंजाब एक, जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि खालिस्तान हम बनाएंगे, जो खालिस्तान का सपना देखते हैं, एमएस बिट्टा का क्या संदेश है उनको? देखो जी, मेरा एक संदेश क्या है मेरा, मैं 40 या 42 साल से लड़ रहा हूं। मेरा शरीर 14 बार हमलों से इन्होंने छाननी कर दिया, तोड़ दिया शरीर को, पर मैं दिल से नहीं टूटा। अगर मेरे से आप पूछेंगे आप कौन हैं, मैं कहूंगा मैं सरदार बाद में हूं, पहले मैं भारतीय हूं। और इनको बता देना चाहता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं सुनने वालों को, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह एमएस बिट्टा के टूटे हुए बम्बों के शरीर से और हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रहेगा। थैंक यू बिट्टा साहब, जय हिंद। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और आपने बेबाकी से अपने, वंदे मातरम बिट्टा साहब, आपने बेबाकी से, जैसे आप हमेशा अपनी बात रखते हैं और वही वैसे ही बात रखी, और आपने बिल्कुल वार्न कर दिया है खालिस्तानी सिंपथाइजर्स को जो अभी भी ये सपना देख रहे हैं। लेट्स ओपन दिस अप। एम्बेसडर मंजीव पुरी ऑल्सो जॉइनिंग अस, यशोवर्धन आजाद, रिटायर्ड IPS officer, a distinguished voice on national security, also on the panel. Gentlemen, good evening. Ambassador Puri, diplomacy is a little more than what Trudeau has made it out to be. Suresh, absolutely. I heard Mr. Bitta, and these are the voices of people. Sikhs are Indians. Let's be very clear about it. And these 2-3 misguided people, whatever it is, let's leave them out. But you've come to the real point. Look, a crime, murder, whatever it is, it should be investigated. Do what you want. There are established channels for all of that, everybody. But this particular aspect of making an allegation in the house of your parliament, dressing another
the country, targeting it, etc., is, in my opinion, if I may use this expression, Western countries like to tell the world that you should follow a rules-based order. This certainly goes even against the rules of what are established ways in which diplomacy is conducted. Rather, relations are conducted with countries which are friendly, and India and Canada have no reason not to be on the friendly core with each other, members of the G20, democracies, countries where English is spoken, people are there, etc. So I completely agree with you that, this is way beyond what one has ever heard before. In fact, as far as India is concerned, I can't recall anybody, leveling this kind of an allegation against the government at all in the past, at least in my career. There may have been some oddball case, but I can't recall it. Right. India stands for being firmly against any form of terrorism. And I don't think this extrajudicial kind of action is something which is at all part of the firmament of the government of India. Mr. Azad, when Mr. Trudeau lectures us on rules-based order, on international norms, the hypocrisy is on many counts. When Al-Jawahiri was killed, Justin Trudeau was celebrating. If he calls himself a free speech champion, he should have condemned US action against him. Absolutely. And in even internal matters, there's duplicity because, when there was a truckers' strike in Canada, the kind of brutal action which was taken by the Royal Canadian Mounted Police was absolutely visible. They were forced into jails. They were pushed back with all their might. And when there are secessionist activities happening right in front of you before the embassies, deaths, sentences are being handed out by the Khalistani terrorists, no action is taken. Mind you, even law in Canada has these sections like incitement and hate speeches. So this is something which we've been dealing with Canada for now about 40 years, right from the days of, Kanishka bombing. And that's why the relations have been a little, steely all the time. And it's quite evident whether it was the G20 or in other places. The point which I also want to mention is that, as Ambassador Puri mentioned, there are established norms of investigation. So when the murder of Nijjar took place in June, you talked about 2 masked gunmen and 1 extra. Now, after 3.5 months, when the foreign minister was making a statement on a public platform, mind you, she says that we are searching for the truth. But by that time, they had expelled our diplomat. Now, even now, it has not come in the Canadian press through which they are issuing statements about, snooping on our diplomats, that even one of the masked gunmen has been arrested, whether you got a statement, whether you got some credible evidence or not. So I would certainly say this is going to the top. And one last point, this is very strange that, a bilateral relationship which you have with Canada, and we have, of course, a lot of trade, a lot of activities going on, you go and complain to the other countries. Five Eyes is for sharing intelligence. But do we share our concerns about Canada with USA and UK, about the Khalistani activity? Should we also do that? So this is a very strange kind of thing which I have seen and which has led to a very precarious stage in our Indo-Canada relations. Five Eyes is actually 4 eyes now because I'm certain that Trudeau and his government administration, whatever it is, has its eyes completely shut, because if it is blind to what is happening in their backyard, Khalistan sanctuary is Canada. Yes. It's the world's worst kept secret. And look what Trudeau has achieved by shooting from the hip. The only people or the country that is happy with Justin Trudeau's stance in Pakistan, and less said the better about Pakistan. So that's the kind of situation we are looking at. Ambassador Puri, Yashovardhan Azad, I thank you both for joining us on Times Now. For paucity of time, sir, we'll have to end it here. But the debate and discussion on this, on Trudeau's misadventure, continues. Viewers, thanks for watching.